Okay. So I was talking to you all regarding this Trigona theory, and we were discussing how these three phases one individual passes through, right? So Sattva Guna, Rajas Guna, Tamas Guna. At least once in your life, you will pass through all these phases. But what is important for all of us is to be, अगर आपको अच्छा इंसान बनना है, if you want to a valuable person living with a value, character, moral, the person who is living with the spiritual dimension to his behavior in the industry, तो आपको जानना है कि in which phase you are, right? You have to understand. इंडस्ट्री में भी see, you are going to face so many problems, so many issues. हर रोज कुछ नया है, right? You all are going to fight with different kind of issues in the industry. कभी यूनियन स्ट्राइक होगा, कभी गवर्नमेंट का स्ट्राइक होगा, कभी कोरोना जैसी सिचुएशन आएगी, समथिंग विल हैपन एंड यू ऑल हैव टू फेस इश्यूज इन द इंडस्ट्री, राइट? समटाइम्स your competition will create issues for you, sometimes your own employees will create issues for you, and you are supposed to deal with those issues. And while you are dealing with those issues, you have to know your own personality, by what matter you are dealing, because see, the way you behave according to these gunas results into something, right? You the guna you follow, the guna you follow results into something. It has its own effect of your on your outcome, on your efficiency and effectiveness, right? So आप जो करने वाले हैं उसके ऊपर इन त्रिगुणास का इफेक्ट पड़ने वाला है, मे बी इन योर पर्सनल लाइफ एंड एज वेल एज इन योर कॉर्पोरेट लाइफ आल्सो, राइट? तो पर्सनल लाइफ जो भी है, फैमिली लाइफ हो, मेंटल सेटिस्फैक्शन हो, whatever the things you are having in your personal life, that also have will be an outcome of your behavior according to these gunas. किस गुण से आप बिहेव करते हो, किस गुण के हो आप इंडिविजुअल एज एन इनसाइड. सो आई वाज टॉकिंग टू यू दैट sattva guna people are like having spiritual dimension to their behavior, to their personality, to their thought process, right? As individual doesn't mean that he just a behavior or just an outcome. So when we talk about sattva guna, this guna reflects into their attire, this guna reflects into their body language, this guna reflects into their work dimensions also, work strategies, work dimension, and working styles as well, right? So the way you follow these gunas, this entirely changes your personality, right? एकदम वो चेंज हो जाता है. Like the person who is with tamas gun, let's take an example, will be like having long hair, coming up with like not that much cleanly, हर रोज नहाना नहीं है, कैजुअली उठ के जाना है, जंक फूड खाना है, बर्गर खाने हैं. So it reflects in your personality. आप जब चल ऑफिस में जा रहे हो तो, though your office allows you to wear casuals, but there is a style what kind of casuals you wear, right? Casual attire you wear, there is a pattern of doing something, behaving like a sensible human being. वो भी कुछ कुछ लोगों में मिसिंग होता है. And for example, if I talk to you about this Kabir Singh, right? You all must be knowing him. वो आप सब लोग उसको जानते होंगे, कबीर सिंह को. आप if I talk something about saints or spiritual leaders, you may not be knowing some of them, but Kabir Singh को तो सब जानते होंगे, that I can promise you all, right? So the way he was living his style, like he is an aggressive young man having so many kind of addictions, habits, behavior patterns. You all know how he was behaving, right? So it reflects, the guna reflects in your behavior, guna reflects in your body language, guna reflects in your daily uh, uh, daily routine work, right? So you have to identify, you have to understand in which guna you are, and then you can transform yourself from one side to another side if required, right? So the characteristics of those gunas and meaning of those gunas we already discussed, talked about. So sattva guni people are like good, polite, kind enough, generous, mature, right? Having the skill set of particular thing, knowledge, all those are the characteristics of these people, and they results into well-being of the human being, well-being of the industry we can call, and well-being of their family also, right? दारू पी के रोज इधर उधर घूमने वाला बंदा फैमिली में क्या करेगा, राइट? क्या क्या सेटिस्फेक्शन देगा फैमिली वाले मेंबर्स को, right? He cannot feed his family, he cannot have all the responsibilities. So we all have to understand what kind of behavior we have to have, right? So that nastiness goes into the tamas behavior, right? So you all know how this
sattva, rajas, and tamas means. Why I am talking these things repeatedly? Because we have to connect it to the further thing. And further point is about OSHA model, right? So this sattva, rajas, tamas guna defines your particular classification of personality, right? आपका personality कैसे बनेगा वो define कर देंगे. So as you can see on this particular screen, OSHA model is an outcome of this Trigona theory. इस Trigona theory का impact क्या होता है और behavior कैसे करता है individual? That pattern of behavior is developed by this OSHA model, which has been a result of your adoption of particular guna. कौन सा गुण आपके बॉडी में है, लाइक आपके पर्सनालिटी में है, that results into this OSHA model. And this OSHA model is nothing but like, if you reach to your ownness, I mean, if you reach to a higher level of your human beings and your satisfaction, high level of your satisfaction, if you want to achieve ownness, right, खुद को जानना है, so you have to understand this OSHA model, and this will have an impact while you are interacting with another people in the industry, right? हमें क्यों देख रहे थे उस दिन में मैंने बोला था, why do we need to understand in which guna we are, whether we are into tamas, into rajas, or into sattva guna, and how we can move from one group to another group, one thing to another thing. So as there are so many ways, Sanatan Dharma, Sanatan Sanskriti has already prescribed you so many ways by which you can move from one side to another. If you really want to leave your addictions, if you really want to live a peaceful, spiritual, generous life, what you have to do? Just follow the guidelines given in the spiritual books. Every book has defined us how to behave. Every book of our religion has told us what do you mean by peace, how to achieve peace, how you can live peacefully, right? So Shanti, peace is something which every human being wants to achieve. That is called the moksha in different words, right? That is called swarga, right? That is called swarga in the Sanatan Dharma, the Sanatan Sanskriti, or Hindu culture and scriptures, you can call for that, right? So, like ultimate aim of every human being as per the scriptures is like, Hindus को स्वर्ग में जाना है, Muslims को जन्नत में जाना है, and Christians wants to get into heaven and all, right? So this is how is the ultimate objective of your life as human being. But how we can reach to that level is like through having developed our gunas, because your gunas reflects in your behavior, and that defines your personality, right? So the people with sattva guna, which means they are spiritual people, right? They are spiritual in behavior, in nature, and rajas people are like human in nature. I have defined you what do you mean by rajas, right? I think any one of you must have not any confusion on that, right? अगर किसी को कुछ confusion है तो पूछो. I believe I am talking something sensible which is reaching to you all. Is it? Are you getting my point? कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we were talking about the sattva guna. These people are spiritual people. OSHA model is like SHA. That is, to reach to your ownness, you have to identify these gunas. Like what are the gunas? Sattva guna, rajas guna reflects into human nature. Human nature is like how इंसान क्या है, हम हमेशा बोलते हैं, right? What human beings are like very desperate animal. इंसान के गुण क्या है? इंसान लालची है, इंसान डेस्परेट है, इंसान like wants to curious है. Human beings are curious, isn't it? So these are human elements: curious, desire, desperate, aggressive. These are the things which defines humans from other animals, right? We are knowledgeable, we are skillful. So rajas people, कल मैं आपको बता रहा था राजस लोग कौन होते हैं. राजस को कैसे डिफाइन किया हमने? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस? ग्रीडी, प्राइड, अटैचमेंट, ये सब चीजें उनमें होते हैं, राइट? ह्यूमंस आर, सो राजसेस आर डिफाइंड एज द ह्यूमन स्किल. तो यहाँ पे क्या है? सत्व गुणों के पास स्पिरिचुअल स्किल होते हैं, राजस वालों के पास ह्यूमन स्किल होते हैं, ह्यूमन नेचर होता है, स्किल के साथ साथ नेचर की भी बात है. उनका बिहेवियर कैसा होता है? सत्व वाले स्पिरिचुअल बिहेवियर करते हैं, राजस वाले ह्यूमन जैसा बिहेवियर करते हैं, तामस वाले एनिमल जैसा बिहेवियर करते हैं, राइट? तो सबसे घातक कौन है यहाँ पे? सबसे डेंजर कौन है? दिस तामस गुनी पीपल, राइट? Because this is expected
if us now I don't talk much on the Sattva and Rajas because you all have got an idea about it. So Sattva बोले तो soft, Sattva बोले तो spiritual, Sattva बोले तो which is related to like uh, sadhus, priests, right? Godmans that comes to their behavior, right? So Sattva is all things good, everything going well, so all is well. Sattva is all is well. Human is something is well, something is not well, right? Humans are expected to be very greedy, very desperate, very aggressive, uh, curious in nature. But ये सब भी जरूरी नहीं है, right? If you want to live yourself, if you want to achieve oneness, you need not to have this Rajas attitude also. Rajas वालों का क्या है? They are dominant on others. Rajas Guni people are dominant on others. They always command over other group of people. So इनमें कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है. These are like average people, human, Rajas nature people. But Tamas nature people are like always destroyers. They are not a creators. They will try to find out some of the faults in the system. They will create a setup by which criticize the entire system. They will create something which will harm others in the system, right? So Tamas Guni people are the most dangerous people, and that defines the animalistic behavior of the people, right? That defines Tamas Guni people results into animalistic behavior. Rajas Guni people results into human behavior. Sattva Guni people results into spiritual behavior, right? So this particular thing is defined as OSHA model, which is an outcome of your Trigona theory. So when you talk about OSHA model, you cannot individually talk about OSHA model. You have to talk about from where it has been originated. So it has been originated from the Trigona theory, and Trigona theory was given into Atharva Veda, right? So वेदों से आया त्रिगुणा, त्रिगुणा से आया ओशा, ओशा से आएगा interaction model. How you interact with the social groups, how you interact with the people in society, people in organization, right? So OSHA will result into your interaction model. What will happen if Sattva people results with Tamas Guni people, interacts with Tamas Guni people? What will happen if Sattva people interacts with Rajas Guni people? And what will happen? These three group of people interacts with each other in a different setup. So how it would result into outcome? क्या होगा? Animalistic nature के दो लोग सामने सामने आ गए. What will happen? Nothing than the fight, right? Nothing than the argument, nothing than the criticism, nothing than the like destructive ideas, right? For example, चार गुंडे एक साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे तो क्या वो हाउ टू डेवलप सोसाइटी, समाज में ये जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको कैसे सॉल्व करें, ऐसे थोड़ी सोचेंगे वो, राइट? सो द थॉट प्रोसेस व्हिच कम्स टू आवर बिहेवियर इज एन आउटकम ऑफ आवर नेचर. बोलते हैं ना संगत के गुण लग जाते हैं, राइट? संगत के गुण लग जाते हैं. जिस ग्रुप में आप रहोगे, जिस लोगों के साथ आप रहोगे, उसके जैसे आप बनोगे. So that is how you have to understand in which group you are, in which category you behave, whether you are behaving like spiritual category, you are behaving like human category, you are behaving like animistic category, and then you have to decide the interactions of yourself, which kind of people you are interacting with. So these three things mentioned below are like uh, how historical uh, movement of human being is happening from one group to another group, right? अगर आप इन ह्यूमन बीइंग का हिस्ट्री देखोगे, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट से जैसे इंसान तैयार हुआ एज पर द ह्यूमन हिस्ट्री वी नो दैट. सो एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप जाओगे हाउ ह्यूमन बीइंग हैज गॉट डेवलप्ड ऑन आवर प्लैनेट, उसको देखोगे तो दैट आल्सो इज मूविंग अस फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर कैटेगरी, राइट? सबसे पहले क्या था? So that this second category of being desired for something, being desperate for something, is making us more horrible, right? It's changing our entire behavior. So if you look after human history, the man which was developed in the beginning of human being was a harmonic man. It has been called as harmonic man. Why it has been defined as a harmonic? Because pre-industrial agricultural society, in pre-industrial agricultural society, if you look, क्या था? 1000, 5000, 10,000, 20,000 साल पहले कैसा रहा होगा ह्यूमन बीइंग, राइट? दैट इज pre-industrial like agricultural society. Everything was dependent on the agricultural only. Everything was dependent on the
farming, hunting, and all those things, right? So no industrialization was happened, but the society was harmonic society. Why? Because their desperations, their greeds, their needs were less. उनको सिर्फ खाना चाहिए था, रहना था, and that's it. But as we have defined our happiness in a different materialistic ways, जैसे हमारा सुख का definition change होते गया, we got changed, right? And what happened in and that pre-industrial man was called as the harmonic man, and the man which was into era of industrial development was called as mechanical man. Look at the developments. Harmonic man was moreover spiritual, right? वो ज्यादा हाँ, अभी ये सही है गलत है वो मत पूछो मुझे। कोई लोग बोलेंगे सर अगर प्री इंडस्ट्रियल उसमें हार्मोनिक था तो उस टाइम लोग मरते भी ज्यादा थे, मेडिकेशन नहीं था, साइंस नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, पीपल वेयर लाइक अंधश्रद्धा थी, राइट? लोगों में अंधश्रद्धा बहुत थी। हार्मोनिक था तो क्या वो कुछ प्रॉब्लम आया तो भगवान के पास जाते थे, ऐसे थोड़ी भी हो रहा था, वो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। फाइन, ये हमको अभी पता चला है हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, बट वो भगवान के पास जाते थे, दैट वाज द ओनली वे अवेलेबल दोस डेज, राइट? अगर ये डॉक्टर का साइंस का डेवलपमेंट नहीं होता तो हम क्या करते थे? हम भी भगवान के पास ही जाते थे, हम भी वही करते थे जो हमको स्पिरिचुअल लीडर्स बताएंगे, जो हमको हमारे स्क्रिप्चर्स बताएंगे, हमारा संस्कृति कल्चर बताएंगे, वही हम किया होता, isn't it? So उस टाइम क्या था? Whatever was the outcome, but the people were living with harmony, they were living with satisfaction. अब क्या है? Now we are into the third phase. In the second phase, it was like a mechanical man running behind the desperations, greeds, and materialistic things. Yeah, the man in the industrial society had to go with the automation, development, machine, use of machines to get the work done and all. But in the current scenario, post-industrial information society, I mean, post-industrial information मतलब पहले कुछ नहीं था, एग्रीकल्चरल बेस था, फिर इंडस्ट्री आई, अब इंडस्ट्री में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, right? We are using IT and automation and in artificial intelligence, emotional intelligence kind of things, and which makes a man robotic, right? यहाँ पे क्या था? He was himself working. What is doing here? He has started using someone for his life assistance, and here he himself become the automatic kind of thing. Now he himself is started behaving like machine. तो आजकल हम क्या कर रहे हैं? We are behaving like a robotics only. We are doing we are having Byju's for learning, right? हमको क्या है Byju's? सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म, is the most valued company in the tech industry in today's world, in tech industry, right? In the most valued company in the India, सबसे ज्यादा वैल्यूएशन बायजूस का है। Is it a right platform to have? Is it a right platform to teach and learn? क्या लगता है आपको? How many of you can say that this is the perfect platform to learn? अगर आप सोचो, if you would have been given Byju's for your learning in your school days, क्या हो गया होता? Maybe आपको जॉब अच्छी मिलेगी या everyone will get in. Is it possible that all of them are going to get into NASA? सब लोग कितना भी पढ़े, कितना भी कंपटीशन हो, सब लोग एक ही टॉप लेवल पे पहुंचने वाले हैं क्या? Is it possible? No. That hierarchy would be there. कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, all of the students or all of the people could not be at a similar level. ये चलते ही रहेगा, right? It is said in Gita, जीवो जीवस्य जीवनम, right? जीवो जीवस्य जीवनम in the sense, एक जीव दूसरे जीव को मार के, काट के या दबा के ही जी सकता है, isn't it? अगर टाइगर को जीना है तो he has to eat the rabbit and deer and bears, right? He has to eat all other animals. If human beings wants to live, they have to kill the trees, plants, some animals which we eat, isn't it? So ये तो होगा ही नहीं, चाहे आप बायजूस से पढ़ो या चाहे आप स्कूल से पढ़ो। आपको अगर बायजूस दिया होता, आपको अगर टेक्निकल एजुकेशन दिया होता आज के बच्चों के जैसे, तो आप कहाँ होते? Have what are the things that you could have missed out? You could have missed out uh, those fightings with your friends, those hours and hours playing on the streets with your friends. कितना देर तक आप खेलते थे, आपको याद है? 5th 6th 7th स्टैंडर्ड, 10वीं तक याद करो, 10th स्टैंडर्ड से पहले याद करो, 8th 9th स्टैंडर्ड में what was the time you were spending on the grounds दोस्तों के साथ, and क्या होता था वहां पे?
अच्छे बुरे वर्स्ट बेस्ट सिचुएशन हर चीज का ट्रेनिंग मिलता था इंसान को, इजंट इट? जब हम 8th 10th में थे, वी यूज टू गेट एवरी काइंड ऑफ थिंग, एवरी काइंड ऑफ ट्रेनिंग। जो दोस्त हमें अच्छी चीजें सिखाते थे, वो हमको बुरी चीजें भी सिखाते थे। वी यूज टू डू दैट आल्सो, वी हैव एंजॉयड दैट आल्सो, बट वी हैव गॉट टू नो आवरसेल्फ, अच्छा क्या है बुरा क्या है, वी हैव एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग। अब ये जो रोबोटिक्स एनिमल है, रोबोटिक्स मैन है, उसका क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, दैट यू ओनली predict. I am not saying अच्छा होगा बुरा होगा, but that will be not something which is a character of sattva guni person, which is a character of spiritual nature people. These things will never develop us as a spiritual one. This will develop as maximum, at the max it will develop as a rajas, which are greedy, needy, aggressive, and which are like desperate to do some of the things like a king. Kings ऐसे desperate होते हैं expansion के, नाम के, शोहरत के. Similarly, this will make us at the max rajas. We cannot reach to the higher level that is called as spiritual, and above that we cannot know ourselves by using these techniques. For that we have to follow something which has been recommended by our culture. Recommend क्या है? गुरुकुलम system. गुरुकुलम क्या है? You have to have the attitude of service and seva while you are taking education from your gurus, right? क्या करते थे गुरुकुलम सिस्टम के स्टूडेंट्स? 10 साल 20 साल वहां जाके रहना था, 10 साल 15 साल, और वहां जब रहते हो तो यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स एट योर ओन। जंगल में जाओ, लकड़ी लेके आओ, खाना बनाओ, गुरु की सेवा करो, गुरु को कुछ भी ना कम हो जाए इसका यू हैव टू टेक केयर। एंड व्हाट इट वाज टीचिंग टू यू, दिस वाज इन inculcating the value of service in you, वैल्यू ऑफ सेवा। जो सेवा धर्म होता है ना, वो आपको सिखाता था गुरुकुलम सिस्टम। अभी पता नहीं मुझे कि क्या सिखाएगा। टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू कीप इट बैलेंस एट द मैक्स, जितना हो सके बैलेंस रखने का कोशिश कर रहा हूँ। I believe you all are getting my point and all are on the same platform. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? And why we are discussing? Are you getting my Yes, point? sir. Why we are discussing? We are discussing to know ourselves, to know in which guna we are, whether we are in sattva guni, tamas guni, or rajas guni. See, it develops according to the treatment of your family, treatment of your gurus, treatment of your culture. Your gunas get developed by this treatment. आपका treatment ही अगर गुरु का नहीं है, if you are not listening to a human being, you are listening to someone who is animated platform from Byju's, you are not interacting with each other. आप बोलोगे सर अभी आप तो भी तो Zoom पे हो, isn't it? Byju में भी वही होता है. But yes, we are going to be into a face-to-face discussion very soon. This is this is something is defined as a robotic man, जो आज हम यहाँ कर रहे हैं. If it continues for a longer time, I don't think so. The impact which we get from this schools, colleges, and gurukulams will be on this virtual platform. Difficult है, right? ना मैं आपका फेस देख पा रहा हूँ, ना मैं आपका बॉडी लैंग्वेज देख पा रहा हूँ, ना मैं आपको जज कर पा रहा हूँ whether you are getting my points or not. If the similar thing was happening into a class, I could have understood most of the things from your body language. Whether I am reaching to you, are you getting my points? नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है? That could have been resolved then and there only, right? So these are the limitations of human interactions because of robotic this thing, robotic man, and this post industrialization information technology era, right? Information technology generation we can call it. So it has becoming a robotic generation, right? So इसका आउटकम क्या होने वाला है? इसका आउटकम है interactions, human interactions in terms of uh, your in terms of your personal connects to the groups, to the teammates, to the people in the organization, right? So you understand, if this guna results into different kind of interactions. अगर ओशो मॉडल क्या बोलता है? If you interact with other people, your interactions could have been classified in these types, these ways, right? आपका इंटरेक्शन इन सब चीजों में क्लासिफाई किया जा सकता है. तो क्या है this sattva-guni people interacts with sattva-guni people, which becomes SS category of interaction, right? If sattva-guni interacts with uh, sattva-guni interacts with rajas-guni, that is spiritual interacts with human personality,
राइट, इसको समझो, ये गुना के ऊपर ही है। एस रिप्रेजेंट सत्व, एच रिप्रेजेंट राजस, ए रिप्रेजेंट एनिमल, रिप्रेजेंट एनिमलिस्टिक, रिप्रेजेंट तामस। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इफ स्पिरिचुअल पर्सन इंटरेक्ट विद अ स्पिरिचुअल पर्सन, this results into a very high impact, this results into a very positive impact in your work, in your society, in your organization for that matter. We have to discuss this for a betterment of your management field, right? हमको कोई यहाँ पे धर्म सीखना नहीं है, spiritual ज्ञान सीखना नहीं है, we just want to know that how you can use those concepts in your daily jobs and daily routine in the organization. अब छोड़ो, कितना भी कुछ भी करो, तो हम प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो जा नहीं सकते, रिवर्स तो हम जा नहीं सकते। वी हैव टू go with the flow, whatever developments are happening in the human history, जो हो रहा है उसके साथ ही हमको जाना पड़ेगा। रीजन वी हैव दिस सब्जेक्ट इज हियर बिकॉज जो जिसके साथ जा रहे हो उसके साथ जाओ, बट डू नॉट फॉरगेट दोस थिंग्स, रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स एज योर बेस, राइट? बेस को साथ में लेके चलोगे तो यू विल लिव harmonious life, you will live a very peaceful life, and you will know your you will know the like purpose of your life, why you are living, why you are working. That's what the Indian ethos comes into picture. आप काम कर रहे हो, कंपनी में जा रहे हो, you are sitting into BPO talking to a clients for hours and hours, but you are not getting why you are doing this, right? If you know these things, that you are these values of Indian ethos, then you will get to know why I am doing that particular thing. मैं सेल्स क्यों कर रहा हूँ, मैं कॉल्स क्यों कर रही हूँ, ये सब चीजें जो है वो आपको समझ में आएंगी। एंड if you know this from the spiritual dimension, this will give a satisfaction of working, right? For example, someone is working in a, let's suppose, Idea Cellular call center, उसको दिन भर में 100 कॉल आते हैं, अगर वो कॉल के लिए काम करेगा, पैसे के लिए काम करेगा, उसको क्या लगेगा? अगर वो स्पिरिचुअली सेटअप, उसका वैल्यूज है, मोरल जगह पे है, तो ही विल थिंक दैट कि चलो यार, मैं किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, राइट? आई एम हेल्पिंग समवन टू रिजॉल्व देयर क्वेरीज, आई एम मेकिंग some impact in somebody's life, I am changing somebody's lifestyle by providing them solutions for their own problems through the calls. So that's how it will be useful for all of us. So we need not to become a robotic. We need not to get into this third phase. Though we are there, we are going through that era, but we can keep ourselves into first this particular thing. For that, you need to know your personality, your interaction, and everything, right? So the people, those who are spiritual in nature, if they interact with the spiritual people, that is like the outcome. Expect, imagine, give a thought, क्या होगा? दो अच्छे लोग एक साथ बैठते हैं, दो स्पिरिचुअल लोग एक साथ बैठते हैं, तो क्या होगा, right? And remember another thing, like if spiritual interacts with human being, if spiritual interacts with human nature, अब क्या होगा? यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, right? Both of them are like intellectual, but यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, they will try to dominate something, they will try to come up with something which is of very high nature, they will come up with a very high philosophy which may not be adopted by a society, right? दो बड़े बड़े लोग, I mean bade in the sense, in the knowledge, in the personality, in the behavior, if two people comes together, those who are highly compatible, तो क्या होगा, right? That is also not a good thing, right? If your boss and you have a similar knowledge, similar degree, similar everything, क्या होगा? What will happen? Will your function go properly? Reason, the similarity creates the difference of opinion, right? You will try to criticize each other, you will try to dominate each other, right? So that this particular thing is also not that good. I will tell you which one is the most important in the society, right? So यहाँ पे क्या है, spiritual एक साथ आते हैं, फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, spiritual and human nature people comes together. So this is called as the something which is most common in the society. This is very common in the society, because you know that we interact with the people, those who are better than us always, isn't it? ज्यादातर हम किसको interact करते हैं? To whom we love to interact? We love to interact to an intellectual person, to a knowledgeable person than us. So we, as a human nature people, why we are human nature? Because we are greedy, we are desperate to do something. किसी को जाके मिलना मतलब we are interested, we are curious, and these are the gunas of rajas category people, right? So human people are rajas guni people. They have a desire of development, they have a desire of
achievement, they have desire of knowledge, skills, and some money and attitude and everything, right? So this desperate people makes efforts to meet these spiritual people. और उससे क्या होता है? This interaction is most common and most appreciated, right? This interaction is most common and is most appreciated. Um, so these spiritual people makes impact on the human people, and these human people gets moved to the spiritual people, right? उनका class shift हो जाता है. Human people could be shifted to spiritual people easily, so that in the ancient history, आपको मैंने कल भी बताया था, every king had a spiritual guru for himself, multiple spiritual guides for themselves. वो उनको गाइड करते थे. एक राजा कभी घमंड में ना आए, एक राजा कभी अरोगेंस में ना जाए, and he should not do any injustice to his people. For that reason, kings were having the spiritual consultant with them, and with the help of them, kings were trying to move to the spiritual thing. So पहले बोला था राम राज्य, like Ram Rajya is the most appreciated thing, because Ram was the king as well as he was someone who is into a spiritual category. So he was a combination of spirituality and human skills. That is Rajas. So that is most acceptable, common, and most required thing in the society. So this interaction is very much common. जैसे H में आप हो, you are employee, S में आपका boss है, you are going and interacting with these people. यहाँ पे क्या होगा? These people will create a larger impact and good things for society, right? They will develop something new. They will, because disagreement नहीं है. There is no any disagreement. This H category people, those are human nature people, Rajas Guni people, are ready to learn from the S category people, which are like Sattva Guni people. So disagreement nahi hai, mutual understanding hai, that results into a very common and acceptable platform, acceptable things, right? समझ में आ रहा है? What is SS interaction? What is SH interaction? Anyone who can respond whether you are listening to it or you are getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Clear? What is SH? What is HH interaction? And next is spiritual to animalistic interaction, right? अब ये क्या है? This is not that common. Spiritual to animalistic interaction, right? I'll talk to these three things first, right? इसको थोड़ा रखो. Spiritual to animalistic. This is a dangerous category. So this HH interaction, yeah, human interaction, like Rajas Guni people comes with Rajas Guni people. What will happen? Compromises, understanding, levels. They both are of similar level, and they want to do something desperate things. They want to achieve. उनको expand करना है, बड़ा होना है, right? They will come up with new ideas. So who are these kind of people? These kind of people are your colleagues, right? HH interaction क्या होता है? HH interaction happens on the level of your colleagues. This particular happens from you to your boss, and this particular happens in an upper level, that is your boss to boss, that is board of directors level, for your understanding, right? So अगर हम अपने को एम्प्लॉय की जगह मानते हैं तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होगा एस एस इंटरेक्शन. अगर हम अपने को एम्प्लॉय की जगह मानते हैं तो एस एच मतलब आप और बॉस. अगर आप खुद को एम्प्लॉय की जगह पे मानते हो तो आपका एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय मींस कॉलीग्स, दोज हु आर वर्किंग इन द सिमिलर लेवल, सिमिलर प्लेटफॉर्म, विल बी हैविंग एचएच इंटरेक्शन. एचएच इंटरेक्शंस क्या होते हैं? राजस इंटरेक्शन. दो किंग एक साथ बैठ के बात करेंगे तो क्या होगा बताओ? They will be coming up under mutual understanding agreements. They will be having compromises. They will be planning to get on some other kingdom, right? So they will be planning to have a war with adjacent kingdoms and own this particular land and add it into their own kingdom, right? So HH interactions always results into a very productive thing, some different innovations, some different ideas. तो होता क्या है जब दो कलीग्स एक साथ बैठते हैं, डिस्कस क्या करते हैं हमेशा? हम भी ऐसे ही कंसल्टिंग कंपनी डालेंगे, हम ऐसा फॉर्म खोलेंगे, हम ऐसा फॉर्म खोलेंगे, ये बिजनेस करेंगे, वो बिजनेस करेंगे, राइट? व्हेन यू आर स्टेइंग विद योर रूममेट्स इन द एमबीए, राइट, इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, क्या करते हैं? एक रूम में कम से कम 10 बिजनेस आइडियाज फ्लॉप हो जाती है एक साल में निकल के,
right? Why it happens? Because this is what is your thought process. The similar thought process people are coming together. That's why the outcome is of like whatever they all are thinking. So it is the outcome of your combined thought process, right? Are you getting my point? समझ में आ रहा है? Then rest all combinations you can just imagine they are like representing similar interpretations when different nature people interact with each other. What happens? That's what these combinations are talking about. So I was talking to you about this particular category. This category is about spiritual people getting into interaction with animalistic people, right? Spiritual people getting into interaction with animalistic people. इसका जो frequency है, the number of times this interaction happens is very less, but number of times this interaction happens are very high, right? And this is moderate one, right? Boss को मिलने हम हर रोज नहीं जाते, right? Very few times we get to know, and but this interaction happens every day, right? For top level people also this is also a common interaction. But this is not a common interaction, which is talking about spiritual people to animalistic people. Something coming to your mind? I just would like to know your thought process about this particular combination of human interactions. Right? This is the theory of human interaction, right? Understand, which has been developed from the theory of Trigona. So Trigona results into your nature, behavioral nature, and your behavioral nature results classified into three things, which is spiritual, human, and animal, right? Something coming to your mind if I talk about spiritual and animalistic interaction? Hello, anyone? Yes, sir. Yes, sir. Are you getting any point which is related to spiritual and human interaction? Any example, anything which is like, which we can discuss under this particular thing? Where it happens? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एम्प्लॉय which is HH interaction, employee boss which is SH interaction, top level people, board of directors which is SS interaction. What about SA interaction? SA interaction का कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है क्या? That is what I'm asking. SA, that is spiritualistic and spiritual people and animalistic people. Outcome क्या होगी बताओ? चलो, अगर spiritual people animalistic लोगों को मिलते हैं या वैसा वर्षा, अगर animalistic नेचर के लोग spiritual लोगों को मिलते हैं तो आउटकम क्या होगा? What do you think? सर ऑल डे फिर क्लैशेस हो सकते हैं सर, क्योंकि थिंकिंग चेंज है, एक स्पिरिचुअल है और एक एनिमल नेचर का है। जो स्पिरिचुअल है वो स्पिरिचुअलिटी से सोचेगा और जो एनिमल है उसकी सोच सर एनिमलिस्टिक होगी। ओके, एक डायमेंशन ये हो सकता है, देयर वुड बी अ क्लैशेस। क्लैशेस क्या हो सकते हैं? एनिमलिस्टिक नेचर पीपल विल ट्राई टू डोमिनेट स्पिरिचुअल पीपल, राइट? कैसे होता था? पहले अगर आप पुराणों में जाओगे, रामायण महाभारत में जाओगे, तो राक्षस आते थे और ऋषि मुनि को परेशान करते थे, राइट? सो द एनिमलिस्टिक नेचर पीपल आर क्रिएटिंग थ्रेट्स फॉर द पीपल दोज हु आर इनटू स्पिरिचुअल नेचर। कौन हो सकता है? Who would be a animalistic people, animalistic nature people around you? वो सोचो, who all are those? Right, they are there, isn't it? Sir, sometimes Yes, बोलो. the company of boss of the company. किसी कंपनी का बॉस हो सकता है सर। Boss of Some case sir, few cases में। if he fires, he is like into a understanding अलग-अलग हो सकती है, that is always acceptable. But मैं आपको एक example बताता हूँ, which may be helpful for you to understand, right? Spiritualistic nature people
and animalistic nature people. अगर ये दो लोग एक साथ आते हैं, what will happen? See, spiritual people are those who are at the higher level of their personality, right? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. Though the Rakshasas were creating issues, Asuras were creating issues for Rishi Munis. आपने कभी देखा है कि ऋषि मुनीज ने राक्षसों के साथ फाइट किया है? Have you ever have had any kind of story like this in Indian scriptures? ऋषि मुनि कभी लड़ते नहीं थे, भले वो राक्षस आए, उनका आश्रम मार जाए, कुछ भी करे. ऋषि मुनीज यूज्ड टू कॉल राजस मुनि पीपल टू प्रोटेक्ट देम. एग्जांपल देता हूँ. जब आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट ऋषि, एक ऋषि थे, हाँ, संदीपनी ऋषि. संदीपनी ऋषि वाज डूइंग द यज्ञ, राइट? संदीपनी ऋषि का यज्ञ चल रहा था और वहां पे राक्षस लोगों ने अटैक कर दिया था, राइट? राक्षस लोगों का वो यज्ञ इसलिए था कि संदीपनी ऋषि वांटेड टू गेट some powers which will be useful to destroy the entire असुर कमिटी, राइट? ह्यूमन बीइंग के वेलबीइंग के लिए उनको कुछ पावर्स चाहिए थी. वो यज्ञ कर रहे थे ब्रह्मदेव को. तो वो जब यज्ञ कर रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने असुरों ने उन पे अटैक कर दिया. तो ऋषि मुनि लड़ने नहीं गए. उन्होंने क्या किया? राम और लक्ष्मण को प्रोटेक्ट करने के लिए बुलाया अयोध्या से, राइट? ये अगर स्टोरी आपको पता है तो आप कनेक्ट कर पाओगे, शॉर्ट में कहीं आइडिया है तो ऋषि मुनि यूज्ड टू नेवर फाइट. तो स्पिरिचुअलिस्टिक पीपल नेवर गेट इनटू दिस काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट. वो क्या करते हैं? वो स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, राइट? दे डोंट गेट इनटू डायरेक्ट फाइट. आप अगर कंपनी में कोई लेट्स सपोज कोई एम्प्लॉय कंपनी में कोई अनएथिकल काम करता है, राइट? तो उसको निकालने के लिए टॉप लेवल के लोग आते हैं क्या? नो, दे गेट द मैनेजर्स, दे गेट द मिडिल लेवल पीपल टू वर्क ऑन दोस पर्टिकुलर थिंग, राइट? अब अगर अप्रिशिएट करना है तो फिर सब आएंगे अवार्ड वगैरह देने में, राइट? स्पिरिचुअल लोग. तो दिस इंटरेक्शन इज नॉट दैट कॉमन. दिस इंटरेक्शन इज वेरी फ्रीक्वेंट, very less frequently happening interaction in the society. But एक चीज है, whenever animalistic people try to create issues for the spiritual people, these people do not react, they do not respond to this particular thing. They try to change the behavior of animalistic people with good deeds, या फिर with the intervention of the other kind of people, that is rajas people, with the intervention of rajas people. ये फिलोसॉफिकली हो गया, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया. राजस पीपल के इंटरेक्शन लाएंगे, उनको डील करेंगे, ये फिलोसॉफिकल हो गया. प्रैक्टिकल में क्या होता है? ये लोग उसको चार चीजें अच्छी समझाएंगे, स्पिरिचुअल लोग. तुझे ये करना है, वो करना है, कर, नहीं तो फिर वी विल गो एंड फाइल अ केस अगेंस्ट यू. अगर आप प्रैक्टिकल में देखोगे तो, राइट? टॉप लेवल के लोग कभी रास्ते पे आके झगड़े नहीं करते, कभी वो फाइट नहीं करते. दे आर नॉट गुंडास, दे आर नॉट गुंस, राइट? दे आर नॉट कमिंग ऑन द स्ट्रीट. वो कभी डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेंगे. दे विल गो विद द, पहले तो समझाएंगे, छोड़े यार क्यों हमारे पीछे पड़ रहा है, हमने तुमको कुछ किया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया. जनरल भी वैसा होता है. पावरफुल पीपल डू नॉट दैट इजीली गेट इनटू फाइट विद द चीप पीपल. बोलते ना, मतलब इट इज सेड दैट कि नंगे से खुदा डरे. उसको क्यों जाने का? उसके पास जाओगे तो यू आर गोइंग टू बी हार्म होंगी, आपको लॉस ही होने वाला है, राइट? तो वो अगर कोई एम्प्लॉई है, बॉस को गाली गलौज देता है, तो बॉस सीधा उसको आके नहीं बोलता है कुछ. वो बोलता है ठीक है, नोटिस देंगे, समझाएंगे. फिर वो उसके बॉस के जो असिस्टेंट होते हैं उनको भेजता है उससे बात करने. तो दिस इंटरेक्शन इज नॉट दैट कॉमन. दैट इज, दो चीजें याद रखो. स्पिरिचुअल पीपल do not get into direct conflict with the animalistic people. They try to resolve this animalistic people's issues with the help of some value addition to the animalistic people. कुछ ज्ञान देंगे उनको, कुछ बताएंगे, समझाएंगे, ऐसा करो, वैसा करो, ये करेंगे, वो करेंगे. फिर भी नहीं समझता है तो then it has been treated with the help of rajas people. फिर भी वो डायरेक्ट इंटरेक्शन में नहीं जाते. एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ आपको. Have you heard about the story of this Valmiki Rishi and someone called Narad and Valmiki? Valmiki Rishi आपको पता है, जिसने रामायण लिखा था? सुना है कभी? वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखा था. He was but रामायण लिखने से पहले वो कौन था? Right? He was named as Valya.
वाल्मीकि का some another version वाल्या, राइट? हम राजा को लाइक राम को राम्या बोल सकते हैं ना, वैसे वाल्मीकि को वाल्या बोला जाता था। एंड वाल्या वाज द वन, वो एक गुंडा ये था, क्या बोलते हैं उसको, लुटेरा, दरोडेखोर होते ना जंगल में जो रहते हैं उसको, वो था जंगल में रहने वाला एक चोर, बड़ा सा गुंडा चोर, वाल्या कोड़ी। एंड वन डे ही वाज गोइंग, एंड उसका क्या काम था पता है? वो क्या था, लोगों को मारता था और उसकी फैमिली को फीड करता था, राइट? क्या करता था? लोगों को मारता था, लूटता था, और उनको जाके वहां पे उसकी फैमिली को फीड करता था। एक दिन नारद नारद मुनि, आप सब लोगों को पता होगा जिन्होंने रामायण महाभारत देखी, नारद मुनि एक दिन उसको मिले और उसको बोले कि तुम इतने सारे, एक्चुअली क्या हुआ, वो नारद मुनि जंगल से जा रहे थे, उनको पकड़ने के लिए ये आ गया, उनको मारने के लिए आ गया। तो फिर इनको तो ही वाज अ स्पिरिचुअल पर्सन, नारद मुनि वाज, एंड दिस वाल्याकोड़ी वाज अभी कोड़ी मतलब एक, इट इज अ कास्ट विच हंट्स फिशेस, राइट? फिशरी करने वाली जो कास्ट होती है उसको कोड़ी बोला जाता है। तो वो वाल्मीकि ऋषि जो थे वो उस कास्ट में से थे, तो वो रिप्रेजेंट करते थे वहां पे। एंड उनको जब मुनि, मतलब उस कास्ट वाला रिप्रेजेंटेशन, इसलिए मैंने आपको बताया, एक्चुअली कास्ट का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी स्टोरी सुनो। वो वाल्मीकि ऋषि जो थे वो जंगल में एक दिन ऐसे लूटने के लिए निकले थे। पहले वो तो वाल्मीकि ऋषि नहीं थे, इतना समझो, ही वाज अ वेरी बैड मैन एंड ही वाज अ बिग थीव, राइट? तो नारद मुनि एक दिन जंगल से जा रहे थे, उनको मिला। तो नारद मुनि को मिलने के बाद इन्होंने बोला, अभी जो वाले वाज सपोज टू किल नारद मुनि, एंड उस टाइम they used to eat this particular thing, like वो कैनिबलिस्ट है, मतलब they used to eat human meat। तो बोले अब इसको काट के मैं ले जाता हूँ और खाते हैं। तो he used to feed his family। तो बोलते हैं, नारद मुनि बोले, अरे अरे ऐसा मत करो, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, मतलब मुझे मत मारो। तो नारद मुनि was a spiritual person, he was the animalistic person, kind of asura only you can call। तो नारद मुनि बोले, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, डोंट किल मी, एंड व्हाई यू आर डूइंग दिस। बोलता है, आई एम डूइंग दिस फॉर माय फैमिली, आई नीड टू फीड देम। तो बोलते, नारद मुनि ने बोला उसको, डू यू नो दैट दिस इज नॉट गुड कर्मा, ये अच्छा काम नहीं है, एंड इससे आपका पाप बढ़ेगा, राइट? बोलता है, मेरा पाप बढ़ेगा? मेरा पाप क्यों बढ़ेगा? बढ़ने दो मेरा पाप। अगर मेरा पाप बढ़ता है तो मेरे फैमिली वाले आएंगे मेरे साथ, मैं उनके लिए तो कर रहा हूँ, राइट? और मेरे साथ आएंगे तो हम पाप अपना मिल बांट के ले लेंगे, जब उसका स्वर्ग में जो भी रिजल्ट लगने लगेगा, हम उसका अपना पाप मिल बांट के ले लेंगे। तो बोलते हैं, तुम एक काम करो, ठीक है, मुझे मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बट एक काम करो, सबसे पहले आप घर पे जाइए और आपके फैमिली वालों को पूछो वेदर यू आर रेडी टू टेक द शेयर्स ऑफ माय पाप कर्मा, राइट? तो और वो हाँ बोलते तो यू कम एंड किल मी। तो वो घर पे जाता है और सबको पूछता है कि, वाइफ को पूछता है, आर यू रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ माय बैड कर्मास व्हिच इज टू बी पेड, व्हिच हैज टू बी रिपेड इन द like narka, you know, heaven and hell, which we have to repay in the hell। बोलती है, वो बोली, मैं क्यों करूं, मैंने थोड़ी मारा है, मैंने थोड़ी आपको बोला था लोगों को मार के ही हमको खाना खिलाओ, यू कुड हैव हैड डिफरेंट वे फॉर फीडिंग फैमिली, राइट? तो वो बोलती है, मैं नहीं लूंगी। तो वैसे कर करके वो सब बच्चों के पास जाता है, 2-3 बच्चे होते हैं जो भी उनके, उनको सबको पूछता है कि तुम मेरे पाप कर्म का शेयर लेगा क्या, हिस्सा लेगा क्या, would you be sharing this bad karmas for me। तो हर कोई उसके फैमिली में बोलता है, नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं ये, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फीड योर चिल्ड्रन। तो ये कैसे करते हो, दैट इज योर पॉइंट, योर प्रॉब्लम। तो सिमिलरली जब हम सोसाइटी में रहते हैं, जब हम पैसा कमाते हैं हमारे फैमिली को फीड करने के लिए, अगर हम अच्छे कर्मों से कमाएंगे तो दैट हमने अच्छे कर्मों से ही कमाना चाहिए, क्योंकि नोबडी एल्स इज गोइंग टू कम एंड पे फॉर योर कर्मा। आपका फैमिली मेंबर नहीं आएंगे, आपके बच्चे नहीं आएंगे, बीवी नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा, राइट? तो ये वाला को टेंशन हो जाता है, बोलता है, अरे साला इतने, इनके लिए तो मैं इतने दिन से लोगों को मार रहा हूँ, काट रहा हूँ, और इनको खाना पीना खिला रहा हूँ, इतने लोगों को मैंने लूटा, इतना मैंने पूरा काम किया, राइट? तो he goes back to the Narad Muni in jungle,
और जंगल में जाने के बाद उनको बोलता है कि नारद जी, आई टॉक टू माई वाइफ, आई टॉक टू माई चिल्ड्रन, एंड आई गॉट टू नो दैट nobody is there who is ready to be a part of my bad karmas, and they are not ready to share my पाप karma. तो नारद मुनि बोलते, देखा ना, मैं इसलिए बोल रहा था तुमको, जो भी कर रहे हो अच्छे कर्मों से करो, and you drop this nonsense things of killing others and doing good things for your family. So we have to learn a lesson from this. And this spiritual person of Narada, spiritual person like Narad has gave him some dimension, some direction of his life, which has been entirely changed his entire behavior, personality, and his future also. उनका फ्यूचर ही चेंज हो गया। वहां से वो नारद को मिले, नारद ने इनको ये सुना है कि तेरे पापों में कोई हिस्सा लेने वाला नहीं है, तो ये बकवास बंद करो। तो उन्होंने किया। फिर उसके बाद नारद मुनि ने उनको तपश्चर्या करने को बोला, प्रायश्चित लेने के लिए। तो ही प्रेड फॉर गॉड फॉर लॉन्गर टाइम। फिर उसको भगवान मिले, फिर उन्होंने उसको टास्क दिया, फिर उन्होंने वो लिख दिया, वाल्मीकि ऋषि ने रामायण। फिर उसको तुलसीदास ऋषि ने काव्य के रूप में लिखा था वो। तो दैट इज डिफरेंट स्टोरी, right? So why I was telling to you all is like this is how the spiritual people changes the behavior of animalistic people. चेंज कर सकते हैं तो ठीक है, आप बोलोगे नहीं करोगे तो क्या, चेंज नहीं करोगे तो क्या होगा, नहीं चेंज करेंगे फिर भी दे डोंट गेट इनटू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद दिस पीपल। एंड जब डायरेक्ट इंटरेक्शन में आते हैं तो दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड, राइट? कुछ समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग थिंग्स? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And one more very important and interesting story is there. If you have heard about the name called Angulimal, आपने अंगुलीमाल के बारे में सुना है क्या? अंगुलीमाल, you know? हाँ सर, सुना है। Right? हाँ सर। He was also a very like cruel kind of thief, right? वो भी एक and latest story है, that is a Buddha's era, right? That is related to Gautam Buddha. So Gautam Buddha is a spiritual person and spiritual entity. You all know that. This particular Angulimal का story. अंगुलीमाल का स्टोरी क्या है? अंगुलीमाल नाम का एक बड़ा गुंडा रहता है, वो ऐसे ही जंगल में जाते हुए लोगों को काटता है, मारता है, लूटता है, और उसका हैबिट होता है कि उनकी उंगलियां काट के उसका माला बनाता था। He used to make the garland and put it into his neck. सिंपल वर्ड में बताऊं तो वो लोगों की उंगलियां काट के नेकलेस बनाता था, पहन के घूमता था। आप लोग सर्च कर सकते हो, गूगल पे स्टोरी भी मिलेगा, यूट्यूब वगैरह में। थोड़ा सा रेफरेंस इधर उधर हो सकता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, राइट? क्योंकि I am not a Baba who knows the entire spiritual thing, but I have got some examples for you which I believe and I understand कि ऐसा करोगे तो कुछ अच्छा ही होगा, राइट? तो ये अंगुलीमाल का एक बड़ा गुंडा था, पूरे गांव को परेशान करके रखा था उसने। अंधेरा होते ही वो गांव में जो भी दिखेगा उसको पकड़ता था। He was not like कि बाहर से लोग आने दो या फिर कुछ होने दो, जिसको दिखे काटने का, मारने का, लूटने का, पैसा लेने का, जो भी था, एंड उंगली काट के उसका माला बना के पहनने का। तो एक दिन बहुत परेशान हो गए लोग, बट वो गांव में कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलता था। ऐसे सालों साल चले गए। फिर वन डे गौतम बुद्धा केम टू दैट विलेज। ही वाज ऑन द पिलग्रिमेज, राइट? घूम रहे थे, लोगों को शिक्षा देते देते घूम रहे थे। तो ही happened to that particular village one day, and then people started complaining Gautam Buddha that they are going to this particular issue, and ये बंदा हर 8-15 दिन में, महीना भर में किसी न किसी को मार देता है, भले वो बाहर के गांव से आने वाले लोग हो या फिर जंगल में से जाने वाले। पहले क्या वॉकिंग रोड थे, जंगल में से जाते जाते लोगों को मारता है रास्ते से। तो गौतम बुद्धा वाज लाइक, ठीक है, लेट मी मीट हिम, राइट? तो गौतम बुद्धा ऐसी थोड़ी कि किसी के घर पे जाके रुकेंगे या फिर कार, तो वो अपने गांव के बाजू में एक बड़ा सा पेड़ देख के उसके नीचे बैठे, वहां के लोग शिक्षा लेते थे, कुछ ज्ञान लेते थे और चले जाते थे। They were taking life lessons for themselves. So one day at night, this Angulimal came in front of Buddha. He happened to Buddha's that big tree जहाँ पे बुद्धा बैठे थे। तो जाके इंटरेक्शन हुआ, and this Angulimal threatened Gautam Buddha saying that you have to give me whatever you have, and
all those ornaments and all whatever you have, uh, and if you don't do so, I will kill you. That was the thing told by Angulimal. And at that time also Angulimal had this mala in his neck. He was wearing that thing. So गौतम बुद्धा को तो पहले से ही पता था कि ये ऐसा ऐसा है, लोगों ने बता के रखा था. वो बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू किल मी, आई हैव नथिंग टू गिव टू यू, सो you can kill me. But like Angulimala was threatening Gautam Buddha, like if you don't do so, I am, you know that I am the biggest, I am the baddest person of this thing, and I am most powerful man, and ये and वो. तो गुंडे होते हैं ना, हमेशा कोई ना कोई आके मिलता है आपको. कभी कभी आपको आपके सीनियर्स भी मिल जाएंगे इस नेचर के कि अरे मैं तो हूँ, मैं सबसे पावरफुल हूँ, ऐसा है वैसा हूँ, बताने के लिए. तो वैसे ही बताना शुरू कर दिया उसने. And finally he said कि I am the most powerful person in this area, and I will definitely kill you. Gautam Buddha said, okay, fine, you can kill me. I don't have anything to give you. But before that, you have to prove one thing, that whether you are a really powerful man or no, you are really powerful person or no. तो बोलता है, tell me anything, I can do anything for that. तो बोलता है कि you go and bring me 10 leaves of a tree. ऐसा हाथ दिखाते, एक पेड़ के पास जाइए और उसके 10 पत्ते तोड़ के लेके आओ. राइट. बोलता है ये क्या पावरफुल का टेस्ट है क्या? बोलता है ठीक है. आप पहले कैसे होता था स्पिरिचुअल, आप बोलोगे इतना सुनने के लिए टाइम कैसे, फिर लाइक इतना थोड़ी सुनेगा वो, गुंडा मारना है मारेगा. दोज डेज वी आर सेइंग दैट पीपल वेर हार्मोनियस. ये जो गुंडे विंडे भी थे ना, वो शांत दिमाग के थे. मतलब शांत दिमाग इन द सेंस, चलो ठीक है, दया क्षमा शांति था, कोई मांग रहा है, ऋषि बोल रहे हैं, सन्यासी बोल रहा है, गौतम बुद्ध जैसा इंडिविजुअल उसके सामने है, तो चलो ठीक है, करने के देखने में क्या जाता है. दैट्स हाउ दिस पीपल वेयर बिहेविंग दोज डेज. आपने कभी स्टोरीज भी सुनी है, राक्षसा ससुरा, ये सब लोग भी अच्छे कैटेगरी में ही आते थे, बट दे हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर. राइट. रावण को आप देखोगे तो ही वाज सच अ काइंड ऑफ पर्सन. तो गौतम बुद्ध बोलते ठीक है, you go and give me 10 leaves, get me 10 leaves of that particular tree. वो जाता है, he brings 10 leaves and बोलता है see, I have proven it that I am very powerful person. Then Gautam Buddha was like no, you have not yet proven. You go and put these leaves back on that particular tree. Right. Go and put these leaves back on their place. जाओ और इसको फिर से जोड़ दो. तो बोलता है ऐसा कभी होता है क्या? पागल समझेगा मुझे, मैं कैसे जोड़ सकूंगा? तो गौतम बुद्धा वाज लाइक नहीं, यू आर द मोस्ट पावरफुल मैन, यू कैन डू एनीथिंग ऑन दिस प्लैनेट, यू गो एंड डू दैट. तो बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट पुट दिस लीव्स बैक. तो गौतम बुद्धा वाज लाइक अरे तू इतना नहीं कर सकता, तो पावरफुल किस चीज से है तू? टेल मी बाय व्हाट वे यू आर मोस्ट पावरफुल. ये 10 पत्ते तुमको जोड़ना नहीं आता है, तो तुम किस चीज से पावरफुल हो? So he got to know that yeah, some philosophy of his life was going wrong, and he changed his mind. He got into he became a disciple of Gautam Buddha, and he got into lessons of peace and lessons of constructiveness. Then this spiritual kind of person changed the nature of this animalistic kind of person by giving him some life mantras, life lessons and all. So this Angulimal has stopped doing this killing people and all his stuff. So this is how these people changes your nature, right? ये लोग कैसे change करते हैं? By adding some values to your knowledge, wisdom, understanding and all, right? समझा? Anything to learn today? How you should behave in the organization. बच्चों जैसा स्टोरी सुनाना है, आई नो दैट, बट जरूरी है आप लोगों को. आई बिलीव इट इज रिक्वायर्ड फॉर यू ऑल. स्टोरी है बच्चों के लिए, बट वी बीइंग अडल्ट आल्सो फॉरगेट दोस थिंग्स. राइट. हम भी क्या याद रखते हैं, हमको भी तो कहाँ पता है कि अंगुलीमाल का पूरा स्टोरी क्या था. राइट. तो पत्ते जोड़ने का नहीं कर सकते हो, तो यू डू नॉट हैव एनी राइट टू कट आल्सो. So you cannot cut people's head, you cannot cut their fingers, and you cannot wear the garland of those fingers. That is called as Angulimala, right? So तो वो भी तुम पहन नहीं सकते हो. तो ये समझाने के बाद उसने छोड़ दिया. So the lesson for all of us is that if you cannot be constructive in the industry,
If you cannot be constructive in the industry, at least do not be destructive, right? Do not be destructive. Do not cut the things. Do not break the things. So whenever you are into competition, you are fighting with the competition in the industry. Whenever you are competing with your employees or with your stakeholders or whoever it is, right? Up- you are competing with your competitors, with your colleagues, whatever. So you have no right to go for breaking anything. You should not break anything, because breaking is easy and keeping it back, right, connecting is very difficult. So that's what the lesson was to that particular story. And you all have to remember while you are interacting it with the people, ये चीजें आपको याद रखनी है whenever you are interacting with various people in the industry. Any doubt, queries? Any question? Any question, guys? Who is taking care of attendance? May I know who is here? Is there any assigned person who is taking that attendance? No, sir. Okay. No one has been asked to take attendance. किसी को बोला नहीं attendance लेने को? Actually, sir, I'll do already done it. Sorry, Deepti. Sir, मैंने already ले लिया. हाँ, but you are I taking have already done it. daily, na? Yes, sir. Attendance. So I'm just asking because we should not miss on that particular thing, and we will get this thing in discussion also. Okay, okay. Fine. Okay, sir. Point of your syllabus, I believe कुछ किसी को problem नहीं है. अगर है तो आप पूछ सकते हो, and if not, we will proceed. Okay. So Okay, sir. we were talking about uh, we will talk about this particular thing which is called as the human values. Okay, sir. Human values. अभी the way the responses. Hello, please. The way I am getting responses, I think question पूछना मतलब time waste ही है. So No, sir. very few, only 2 people are responding, and I appreciate your efforts, Dipti, Radha, and some 2-3 more people are there, those who are responding. I'm happy for you all. But the point is that this should reach to you all. You should all participate in the session, right? Participation in the session. Point is that we are going to talk about the next topic of your syllabus, which is related to the human values. What is the importance of human values in the individual's career, right? How human values will help you to make your career most effective. How you are going to reach to a desired level by practicing human values, right? So what are the values? What do you think are the core values? Values में क्या क्या आता है? क्या है values? What do you mean by values? Values, like definition कैसे कर? How do you define values? Right? These are the values, right? Passion, commitment, integrity, trust, honesty, uh, reliability, efficiency, positivity. Optimism is about this can be this also can be a value. Optimism can be also a value. But when you talk about values, what do you mean? What do you mean by these words? What is that? Like, what is passion? What is commitment? What is responsibility? What is honesty, integrity, discipline? What is determination? What is dedication? What is loyalty? What is your commitment towards organization? What do you mean by those words? What do you mean by values? Right? Values क्या क्या है? These are the values. What are the values? These are some points which talks about human values. Right? Do you know the value? Do you know the meaning of value? What is the definition of value? You all. सर किसी भी चीज की कीमत करना, वैल्यूज, महत्व.
Yes, it किसी is भी चीज का Mahatva, महत्व. but it is not the Kimat. This is not the price, right? Value is not the price. There is difference between values and price, right? Value and values. Let's talk about value first. What do you mean by value? Value in the sense product का value और price, ये दो चीजें, right? You have some value of particular product, you have some price of that product. So price is something which you pay, which is its monetary worth, right? So value means क्या है? What is value? Is it like value is the worth in the sense utility, usability, usefulness of that particular product is the value. What is the value of two-wheeler? And what is the price of two-wheeler? So the price of two-wheeler is like 60,000, 70,000. The value of two-wheeler is transportation, right? What is the value of a water bottle? Satisfaction to your thirst is the value of a water bottle. And 20 rupees is the price of water bottle, right? So what are human values? Human values are the deeds of individual. Deeds of individual. It means these are the actions of individual. These results creating into a which results into creation of a very positive impact on a society of or on any organization, right? It is an action of individual which results into positive impact on a society or positive impact on a organization, for that matter, for a social groups or for your family or for your own self, right? You may have, if you have a good values, it will result in a good practice of your personality. Values can be of positive and negative in nature, right? Values positive negative bhi ho sakte hain, but we are talking about the positive values, human values, which are expected to be practiced by a human being, right? So what are the values which are expected to be practiced by every human being? Can we expect a human being a very aggressive? Can we expect a human being a very destructive in nature? Like, can we appreciate the acts of terrorists, acts of this voice? Like, can we accept those things in any way? We can never do that, right? Can we accept the acts of gundas in the society? No. So the values are the things which we expect to be behaved by a human being, to be practiced by a human being, and these are the some good actions results into a positive impact on the society, right? So what can have a positive impact on the society? If you are responsible enough, if you are passionate enough, if you are reliable enough, if you are optimistic, if you have a positive attitude to do the things, this will create a good impact on your work culture in a society, in a organization, right? Work culture in an organization. So you as an individual is expected to work on a human values, and those human values, see, the best life practices are explained in a Gita, in a Bhagavad Gita, right? So Bhagavad Gita में बहुत सारे best practices explain किया गया है, and Sri Krishna has told Arjuna, explained Arjuna in a very deep and meaningful way how you can get these things practiced in your life, and how can you become a most efficient person, how you can be a like the person who owes his own karma a lot. तो अगर आप valuable इंसान हो, if you are a person who is living with his human values, you will be a performing asset of organization, right? अगर आप ये सब चीजें लेके कंपनी में जाते हो, तो you will be a performing asset, you will be a positive impact creating person, you will create a positive vibes, nature, culture, and outcome also, right? So these are the things which are required for you to keep in mind when you talk about the values. This we will discuss later, right? So values in the sense, values are basic and fundamental beliefs that guides and motivates individuals' attitude, actions, and behavior, right? So these are belief systems. These are understandings of individual about the कर्मास ऑफ ह्यूमन बीइंग. इंसान को क्या करना चाहिए उसके लिए आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज कॉल्ड एज अ ह्यूमन वैल्यूज.
And if company wants to look human values in you, what would be they checking? They would be checking about your punctuality, honesty, integrity, effectiveness, creativity, right? These are all the values that organization looks into a particular employee. ऐसी कोई company है क्या which is looking for the uh, angry person, aggressive person, like very क्या बोलते हैं उसको, tamas guni person, right? कोई होगा नहीं. So what companies wants in every individual which they are supposed to employ for their company is human values, and these human values are nothing but as per this particular slide. You all keep in your mind. Whenever I talk about human values, these words should rotate around your mind, right? This has to pass through your mind whenever I utter the word human values henceforth. आने वाले एक सेशन में और इस सेशन में we will talk about human values. Maybe we have 15 minutes more. I think we will close this particular point here only. So the human values are like fundamental beliefs of individual. They help us to determine what is important to us, right? And to us as well as to society, to company, right? Your values determines who you are. Your values helps you to identify what you have to do and what are your most important karmas, what are your most important responsibilities, right? Abhi, let's if we talk about the most destructive peoples like world globally known terrorists, उनको क्या करना था, right? Their values determine themselves, like we have to destroy the entire thing. The people, some people are in this are also there in the common society. हमारे आजू बाजू में भी घूमते लोग, right? They are also like, if their values are like कुछ नहीं होता है, मरने दो, जाने दो, करेंगे कैजुअल, पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे लोग तो फिर सोचेंगे ही क्या और करेंगे ही क्या और बिहेव भी क्या करेंगे, right? So your values are again guided by your spiritual understanding. Your values are again guided by your culture, your ethos, right? So ये घुमा फिरा के उधर ही आने वाला, ethos पे आएगा. So what guides your values, what develops your values, is your ethos, right? If you are not properly raised by your culture, you will have the destructive and negative values in the particular behavior, right? So the values describe the personal qualities we choose to embody, imbibe होना चाहिए ये, imbibe to guide our actions, right? To guide our actions. Values are the personal qualities which guides our actions. जो हम करेंगे उसको जो जो वैल्यूज हम रखेंगे वही हमारा एक्शंस डिराइव करेगा. अगर हम पंक्चुअल है तो हम टाइम पे पहुंचेंगे, अगर हम ऑनेस्ट है तो वी विल नॉट डू एनी करप्शन. इफ वी आर determined and dedicated enough, we will complete our responsibilities, right? So your values results into your actions, and so that you have to understand what are human values and how you want to implement those values. If you are sattva guni people, you will never go into office with a hangover, right? अगर हो जाओगे तो that is against your values. It reflects into a tamas guni person. So we are someone who directs our actions. Our values directs our actions, right? So that defines what sort of person you want to be, right? If you take a pleasure to portray yourself as the most bold and casual person, that results the outcome you have. अगर किसी कोई कोई लोग होते हैं ना जो मोस्ट कैजुअल होने में बहुत प्लेजर लेते, they have a pleasure to say that I am very casual person, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, I have no worries to, भले कोई मुझे सिखाए पढ़ाए मैं पास हो फेल हो जाऊं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ऐसा पोर्ट्रेट करने वाले भी लोग होते हैं, राइट? तो या फिर माई लाइफ माई रूल्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है समाज में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस थिंग्स. सो it defines what sort of person you are, right? So this Kabir Singh again is an example, very relevant kind of thing we can call, right? So your values talks about you. On day one I was talking to you all about you represent your family, you represent your culture, right? So you represent your family values whenever you go, जहाँ भी जाते हो जो भी करते हो, you represent your family. कोई अगर कुछ गलत करता है तो हम अरे यार इसके बाप ने यही सिखाया क्या इसको. That is what the outcome we get from people. So people don't blame us as an individual for our behavior. They blame to our family, our culture, our religion, and our spiritual understanding, right? So, and this is like
अब क्यों क्या, आई डोंट नो। अगर आप बोलेंगे सर ऐसा ही क्यों होता है कि हमको ब्लेम करना चाहिए, बाकी को ब्लेम करके क्या मतलब, बिकॉज इन बाकियों का हाथ होता है तुमको डेवलप करने में, राइट। हमको कौन डेवलप करता है, मुझे किसने बड़ा किया है, माय पेरेंट्स हैव रेज्ड मी, माय रिलीजन हैज गाइडेड मी हाउ टू बिहेव, माय सोसाइटी इज डायरेक्टिंग मी व्हाट नॉर्म्स आई हैव टू फॉलो। अगर मैं चाइना में रहता तो मुझे अलग रूल होते, सोशल रूल, मैं इंडिया में हूँ तो मुझे अलग रूल है, राइट। सो माय सोसाइटी आल्सो हैज अ कंट्रीब्यूशन। अरे कहाँ से है रही है, हम बोलते हैं ना कुछ कर दे तो कहाँ से लाए रही इसको, दैट इज व्हाट कम्स to a very valuable dimension of our life, right? So that defines the things which kind of person you are, right? This defines your personality. Values are the manner in which we treat ourselves and others and our interactions with the world around us. Value means the manner, the etiquette, the attitude, the behavior by which we treat ourselves and by others, to others also. तो हम वैल्यूएबल हैं तो हम बिहेव करें, हम बिलीव करेंगे like we should not be addicted, we should have a balanced diet, we should have the good health, wealth, behavior. Like on day one I was talking to you all about getting respect in a society, so we will talk about having respect. Our life values would be tending to earn some respect in a society, and that earned respect will be like a satisfaction for a human being, like peace for our mind. It will make you happy. So being happy is the most important thing of our life, isn't it? So and happiness comes with the satisfaction. If you are satisfied with whatever you have, this will be the most happiest moment. Agar satisfaction, happiness chahiye, for example, you have, let's suppose, a Maruti Swift car. If you want to be happy, if you want to be satisfied, you will be happy. नहीं तो फिर तुमको जैगुआर चाहिए, BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, ऑडी चाहिए, जो है उसका भी मजा नहीं ले पाओगे, राइट। यू कैन नॉट एंजॉय विथ व्हाटएवर यू हैव. So this decides how you treat yourself. This decides how you treat the society. They provide the general guidelines for conduct. So this is simple. They provide you the guideline for your behavior in society. They provide you the guideline for your behavior in the organization and family, right? Understood meaning? Any difficulty? अरे अभी तो बोलो यार, अभी तो एंड करने का टाइम आ गया ना, कम से कम अभी तो बोलो. Yes, sir. Yes, sir. So I think some kind of value addition must have been there for you all. So Yes. I will stop here today, and thank you so much for your patient listening. किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, और I will end the meeting. Should I? सर मुझे एक डाउट है, ये जो बोलिए. थर्ड पॉइंट है ना, उसमें वैल्यूज डिस्क्राइब द पर्सनल क्वालिटीज वी चूज टू इम्बाइब टू गाइड और एक्शंस. सर ये मुझे समझ नहीं आया. देखो, values describe the personal qualities means in the sense like our value describes who we are in the organization, in the society. For example, if I am the person who believes on a punctuality as my value, so I will be reaching to that particular job location or college or somewhere on a given time, right? So the qualities we choose to imbibe to guide our actions, in the sense हमको जो एक्शन करनी है उसके लिए जो क्वालिटी हम एडॉप्ट करते हैं, इम्बाइब इन द सेंस एडॉप्ट एंड इनकलकेट, राइट, जो हम इनबिल्ट करा लेते हैं, जो हम एडॉप्ट कर लेते हैं, तो हमारे एक्शन को गाइड करते जो क्वालिटीज हम एडॉप्ट करते हैं उसको हम वैल्यूज बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, यू वांट टू बिकम अ मोस्ट सिंसियर पर्सन ऑफ द इंस्टीट्यूट, राइट, मोस्ट सीरियस पर्सन, मोस्ट डेडिकेटेड पर्सन ऑफ द इंस्टीट्यूट. तो हम क्या क्वालिटीज है, क्या वैल्यूज है जो हम इम्बाइब करेंगे, इनकलकेट करेंगे हम. दोज क्वालिटीज आर लाइक, values are something which we adopt, practice to decide our actions, to talk about our actions, right? हमारे एक्शन को डायरेक्ट करने के लिए जो हम क्वालिटीज अडॉप्ट करते हैं, those things are called as a value. These are the qualities, right? Yes, sir. So Thank you, sir. I actually had a good video of from like YouTube that is talking about the Sri Krishna's guidelines for 10 best values of human being, right? इंसान की जिंदगी के 10 बेस्ट वैल्यूज क्या हो सकते हैं,
उसके लिए एक वीडियो मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किया था. आई थिंक दैट वीडियो इज फॉर 15 मिनट्स. आपका नेक्स्ट सेशन कब है? व्हाट इज द टाइम ऑफ योर नेक्स्ट लेक्चर? Sir, I don't know. सॉरी, 11:30. So 11:30. 11:30 next session है ना? Okay. So let's go through that particular video in the coming session. आज के लिए रुकते हैं. I don't want to stretch your timings a lot. So any question, any queries, you can definitely talk to me right now. And I believe you all have got some value addition by this session. कुछ तो समझ में आ गया होगा, right? Yes, sir. So thank you so much. All the best to you all. Take care. Have a good day. See you in the next session. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, Yes, बोलो. अजय सर क्या कुछ नोट्स या कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड हो सकते हैं? करेंगे. By the end End of of chapter. lectures, I Chapter, yes sir. End of the. share you the Yes, sir. required things, right? Don't worry. Okay, sir. Thank you, sir.